Hey everyone, this is Sapna and welcome back to my channel Be Original, Be Yourself, जहाँ मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू फैशन, स्टाइलिंग एंड हेल्थ फिटनेस। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक न्यूड मेकअप ट्यूटोरियल पे बेस्ड है। एंड इफ यू गाइज लाइक द थंबनेल, द मेकअप विच आई हैव वेयर इन माई थंबनेल, so don't skip the video, watch the full video. Okay, so as usual, I'll be cleaning my face first with Garnier Micellar water with the help of this cotton. My the next I'm gonna moisturize my face with aloe vera gel. बेसिकली विंटर सीजन में जो है मुझे एलोवेरा जेल के साथ साथ वैसलीन भी यूज़ करना पड़ता था अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए, बट बिकॉज अब मेरी स्किन उतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती है इस सीज़न में, सो एलोवेरा जेल इज़ इनफ फॉर माई फेस. Now next I'll be using Lakme HD primer, Lakme Ultra HD primer. The next, with Revlon Color Stay 2-in-1 Compact and Concealer, I'll be using the concealer. And just dab with your fingers to mix it. Now with the same compact powder, I'll be setting my concealer. Maybelline Fit Me foundation. Just a small drop because this is a nude makeup tutorial video. So I'll be using just small foundation. And just mix it with your fingers or your beauty blender. Anything with which you are comfortable. So first I'll be proceeding with my eye makeup. So for that just first I'll fill my brows. उसके पहले जो है मैं इस ब्राउ ब्रश से ये सारे हेयर्स को जो है वो डाउन कर लूँगी. सो पहले जो है मैं ऊपर की लेयर जो है, जो ऊपर साइड का एक शेप दूंगी अपने आईब्रोज को. उसके बाद अपने ब्राउज जो हेयर्स उनको फिर से अपसाइड कॉम्ब करने के बाद जो है मैं नीचे से एक फिनिश्ड शेप दूंगी. So next for my eyeshadow base, I'll be using concealer, mask concealer of this shade, this lighter shade, to fill with the help of this sponge. With the help of this small flat brush. And for the transition shade, you should use the lightest shade because this is the nude makeup. So I'll be using this as my transition shade. This is a small flat brush and you should always dust the extra product. And just make a crease cut, a V shape
like this on the outer corner. Okay, for the next, I'll be using this lighter color in my center part. And just mix both the shades in the crease area with the help of the brush. Just blend it very well. ओके, फॉर माई लोअर लैशेज ऑल्सो मैं ट्रांजिशन शेड पहले अप्लाई करूँगी. उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो ब्रश हो वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो, फ्लैट हो, वरना वो एक पूरा आपके चीक्स तक जो है वो फैल जाएगा आई शेडो. सो बहुत ही पतला रखने के लिए यू जस्ट small flat brush. So first I'll go with the transition shade. Next I'll go with the same shade. So basically my eye makeup is finished. Now I'll be moving to contour my face. For that I'll be using the same Mars color corrector palette. As this is a nude makeup, so I'll be using the darker shade. So with the help of this small flat brush, I'll be using some of the products and just blend it with your fingers. So before I proceed with the blush, I'll be using the compact powder on my whole face to set my foundation. Now I'll be applying blush from M&M palette. This lighter pink shade I'll be applying. Okay, in nude makeup you have to be very careful about your blush. Just add very little, dust off all the excess products and just add a little of blush. Also natural blush on my face because I eat ऑरेंजेस ऑन डेली बेसिस. अगर आप डेली बेसिस पे ऑरेंजेस खाएंगे तो आपके जो चीक बोन्स पे एक नेचुरल ब्लश अपने आप वो एक आ जाती है एंड दैट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक, अ नेचुरल लुक टू योर फेस. अगर आपने मेकअप नहीं भी किया है तो आप जो है एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका फेस लगता है. सो आई विल सजेस्ट कि आप रोज़ एक ऑरेंज ज़रूर खाएं. And plus oranges also contain citric acids, so it's good for your skin, plus it's also good for your health. It will prevent you from many diseases, especially the viral diseases, and ये season जो है वो viral diseases का ही है. So now I'm ready. Next I'll be applying highlighter with the help of the flat brush, this flat brush. And for highlighter I'll be using from the Hilary Rhoda palette. This is a neutral color highlighter, that's why. Just always dust off the excess products. Also I'll be highlighting my inner waterline, inner corner of my eyelids and the brow bone.
For that I'll be using the very small flat brush like this. आप अंदर यहाँ के साइड पे जब आप हाइलाइटर्स अप्लाई करते हैं तो आप अपने ब्रश को जो है डोंट मूव इट अपवर्ड और उस डाउनवर्ड वहीं पे जो है बस एट द सेंटर पे जो है स्मॉल इस तरह से आप कीजिए लाइक दिस. दैट्स इनफ. Applying the lip liner. This lip liner is from CVB, Color Sticks for Eyes and Lips, waterproof. This is a waterproof lip liner. And for the lipstick, I'll be using Mars Professional Makeup Nude Color. This is in the shade 17 Matte Lipstick. Okay, to set your lipsticks perfectly, just use a tissue paper and white loose powder of any. I'll be using white tone loose powder. Any of the loose powder you can use, or the compact powder is also very good. This step gives a more natural color of the lipstick, as you can see. Last step, just put the highlighter in your cupids. And yes, I'm ready. Hey guys, this was all. So if you guys like the video, please give a big thumbs up to the video. Subscribe to my channel if you haven't subscribed, and press the bell icon so that you would never miss any update of my videos. Bye guys. Love you all.